In less than 12 hours from now, Bengal's 44 seats will go to polls in phase 4 of the assembly elections. This phase will see a bitter battle between the Trinamool Congress and the challenger BJP. Of the 44 seats, 14 are spread across the 2 districts of North Bengal, 9 in Cooch Behar and 5 in Alipurduar. The BJP has an advantage in these 2 districts as the party had won both the Lok Sabha seats in 2019. The rest of the seats are in South 24 Parganas, Hooghly and Howrah. The TMC has an edge in South 24 Parganas and Howrah. Phase 4 witnessed an aggressive campaign by both TMC and BJP. For the BJP, Prime Minister Narendra Modi himself led the charge along with Amit Shah, JP Nadda and Yogi Adityanath. The TMC campaign was led by Mamta herself. The key candidates in phase 4 include BJP's Babul Supriyo, who's contesting against Trinamool's Arup Biswas from Toliganj. Another constituency to watch is Behala Paschim, where Mamta aide Partha Chatterjee is contesting against actor and BJP candidate Shrabanti Chatterjee. Even as the state votes in phase 4 on Saturday, a high-octane campaign for phase 5 is underway. এত টাকা এলো কোত্থেকে? একটা মিটিংয়ে কত টাকা নেন? আমি এই সব কথা বলার পরে আমি জানি আপনারা আমাকে খুন করার প্ল্যান করবেন। আমার পাটা চোট করে দিয়েছেন, এবার খুন করার প্ল্যান করবেন। আমার যায় আসে না, আমি যতদিন বাঁচবো আমি বাঘের বাচ্চার মতো লড়বো। तृणमूल कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन उनके व्यवहार से, उनके भाषणों से, उनकी बातचीत से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ये क्या कहना चाहती है? लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही है, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होने देना उनका उद्देश्य है। While the poll battle is at the halfway mark, Shah, in an interview to India Today, claimed the victory will be theirs. तीनों चरण में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित समर्थन बंगाल की जनता का मिला है। हमारे एक आकलन के हिसाब से 63 से 68 सीट, 63 टू 68 सीट के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस 3 चरण के अंदर जीत रही है। जुमला बाबू खूब বড় বড় কথা বলছেন, এই সিট জিতবে, কত সিট পাবে। উনি বুঝে গেছেন যে বিজেপির অবস্থা কি, তাই আমরা আগেও বলেছিলাম এই সব মাইন্ড গেমস খেলছেন। The battle now boils down to whether the BJP can breach TMC's stranglehold on the cities. The TMC, on the other hand, will try to regain its lost ground in rural areas. With Paulami Saha and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.